what is our civilizational goal. And if not coming from the political dispensation or the government, we would at least expect the Hindu organizations, the large Hindu organizations, to give us that clarity. नागालैंड 90% से अधिक ईसाई है, मिजोरम 90% से अधिक ईसाई है, जिसमें मिजो कम्युनिटी लगभग 99.99% ईसाई है, मेघालय कुछ 75% ईसाई है, मणिपुर 50% ईसाई है, अरुणाचल जो पिछले 2011 का जो डेटा है उसमें 37% ईसाई है. Of course, our temples are not in our control, so the temple money is with the government. Thank God for the new CJI, who's actually said that all temple money belongs to the deity and you cannot do secular projects with it. हमारा समाज, हिंदू समाज किस प्रकार से संकटों के घेरे में है. सीताराम जी ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू समाज संकटों के घेरे में, और पहला उसमें वाक्य वो लिखते हैं कि हिंदू समाज को नहीं पता कि वह संकटों के घेरे में है. So the only answer long term, like I said, is a state that protects, preserves and promotes its homegrown knowledge systems, traditions, cultures and values. In other words, you could call it a Hindu Swarajya or Shivaji Maharaj or a Hindu Rajya, Hindu Rashtra, or a Dharma Rajya, as we call at Saryu Trust. कन्वर्जन इसलिए हुआ है क्योंकि उनके बहुत सुपरस्टिशन था, बहुत अंधविश्वास था, बहुत वायलेंस थी, बहुत मारकाट थी, और हिंदू तो उनको ठगते थे, जो प्लेन्स के हिंदू थे वो तो आके उनको ठगते थे. इस कारण से क्रिश्चियनिटी आई, चर्च आए, मिशनरीज आए और उन्होंने बहुत सहायता की. तो इस तरह का नैरेटिव वो चलाते हैं. तो हमारा लक्ष्य ये था कि हम ग्राउंड पर जाके इसकी स्टडी करें और एक घर वापसी का मॉडल तैयार करें कि वहां पर जितनी कम्युनिटीज हैं उनमें किस स्टेट में कैसी स्थिति है. I shall start with a presentation on the Hindu Fund, what we're about, and perhaps also we have some data on the last 6 months of how far we've reached. And of course, like every time, we have one grantee, and today it is Pankaj Saxena. Pankaj has been with Brahat and now founding his own organization called Bodha, and so he'll talk a little bit about his background and what all he's been doing, and how the fund has been able to help his further Pankaj's work in the last year or more or whatever. So I'll get started with what the Hindu Fund is about, but with a little background first. My favorite lines that describe India and its values is from Osho. भारत केवल कोई भूखंड नहीं है, न ही कोई राजनीतिक इकाई, न ऐतिहासिक तथ्यों का कोई टुकड़ा, न धन, न पद, न प्रतिष्ठा की पागल दौड़. भारत एक अभीप्सा है, एक प्यास सत्य को पा लेने की. So we are a knowledge-seeking civilization, a truth-seeking civilization. That is essentially what he's saying. And so it is not, like he's saying, not only a political entity or a piece of geography. It is a practice of these values which defines India as who we are. Elon Musk recently tweeted that it's values of the people that make a nation, not citizenship. Actually, exactly the same sentiment, I've been sort of echoing for a very long time, that it's the values of the people which qualifies Indians to be Indians. And if they do not follow these values, they do not deserve to be citizens of what we call India. Anyways, we are a sacred geography because of the foundation of the Hindu religion and all the philosophies emanating from it. But despite being a majority in perhaps our own nation and the only nation we have, maybe including perhaps the greater India, which would include Nepal and Sri Lanka and perhaps parts of Myanmar or the region, some parts of Southeast Asia and whatever, if we still feel threatened and constantly feel under attack. And the reason for that is the Indian Constitution, which accords equal status to all religions, irrespective of the values and outcomes they deliver in society. I talk about Indic values, where we see divinity in all creation. Aham Brahmasmi. There is no othering at the spiritual level. Like I said, we are a knowledge-seeking, a truth-seeking civilization. And hence, because we seek the truth, we come to the conclusion that perhaps many paths lead to the same divine, to the same truth. And so there can be disagreements and debates and so on and so forth. But unlike Abrahamic values, where our values are unlike Abrahamic values, Islam and Christianity in particular, where my religion is the only true one, which splits the world into believers and infidels and throws the infidels into
permanent hell for eternity on Judgment Day, and so on and so forth. You can't question the scripture. And because the Judgment Day will only come when all people of the world have been converted, so there is a missionary zeal to reach that point and help the Creator in fulfilling His purpose. And this has reflected in Africa. That's how Africa is. It has been split into Christianity and Islam. Native religions, these large swaths are actually not true. They're only, it just shows that some swaths exist in Africa, but largely it's been split. And that's exactly what they want to do in India. So difficult has this idea been that, good people cannot go to hell, cannot go to heaven, that they had to posthumously baptize Gandhi in 1996 so that he could enter heaven on Judgment Day. Not many people know this, and not many people challenge the church with this piece of information. And it's I'm not making all this up, but Rabindranath Tagore actually said this. There are only two religions on earth which have distinct enmity against all religions. These are Christianity and Islam. They're not just satisfied with observing their own religions, but are determined to destroy all other religions. That is what we are facing, and that is why we feel threatened. And I asked this question: if 80% Indians were to be Muslim, would India remain as we know it? People say, oh, the geography of India remains. India, if it's seen as geography, will remain, sure, could remain. Even that is doubtful. But even if it remains, it doesn't have the values as we know it. Would India really remain? What is the difference between Pakistan and Bangladesh and India? What if we were an Islamic Indian subcontinent? Would India remain? No is my view. So I'm absolutely against the idea of Akhand Bharat because Islam is absolutely clear about establishing Islamic rule in India. And we talk about, and I'm a Modi Bhakt, I must clarify, people see me as a critic of Modi and say that, oh, you're a critic and, sung and whatever else. That is not who I am. I'm just clarifying that there are things that are important for the nation and there are things that are important for the civilization. And I think we need to learn to distinguish between these two things. For the nation, Modi ji has done just tremendous things to put us in the Committee of Nations among the top. And yet a Viksit Bharat economic goal in 2047 is perhaps not enough. What is our civilizational goal? And if not coming from the political dispensation or the government, we would at least expect the Hindu organizations, the large Hindu organizations, to give us that clarity on what is the civilizational goal that we want to achieve in 2047. Unfortunately, that is not coming through. I will play this video. We have to make our education system independent of this secularism, Islamization of knowledge. So we want to Islamize all sciences, whether it's biology or physics or medical science, and then you go to community and then society and to country. And that's how the entire nation is reformed. First move that I will do, I will abolish the constitution and I will establish the only logical and rational constitution, which is the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That will be my first move. So he's unapologetic about what his goal is, and I actually really like such small V's. He's sitting in Chicago and saying this, so he's actually not saying that for India right now. He's even being more audacious, and he's saying that for the US also. So, and he lives in Chicago and says all this while sitting there, and he's tolerated. So basically, Islam has learned to use democratic values to subvert democratic values, and that is their goal. And not too dissimilar from what Christianity wants to do. They use democratic values to perpetuate and proselytize their religion with coercion, with data, with international funds, international pressure, and so on and so forth. So all this red area is basically the unreached populations of the world. They have mapped every small tiny group. So about 2041 unreached people groups have been mapped. Okay, and that's 95% of the country, they say.
has been unreached. And that is the goal of Christianity under the Joshua Project, which is a collective project. There is no organization called Joshua Project. They're just a collective of different organizations. And we argued when we talked to Grok to supply information to a legal team, and we found that World Vision, which takes money in India for children, is also a participant in the Joshua Project. They actually had project managers working in somewhere in South India to map and coordinate with a particular leader of the Joshua Project assigned. Very organized. So organized that within 25 kilometers of Amritsar, about 23% population has been converted. And this is 6, right? So turban wearing, hallelujah saying Christians are very common now. In fact, there are preachers now, Narula, somebody who actually wears a white turban, and has the same saintly look as a lot of gray-haired, gray-bearded Sikhs have, but preaches Jesus's call to people. So it's absolutely a devastation and very treacherous, terrible situation in Punjab. And so is the case in Godavari region and in coastal Tamil Nadu and all sorts of parts of the country. This man, George Punaiya, Rahul Gandhi had met him during his Bharat Jodo Yatra, and he got lectured on that Jesus is the real God, when he asked him who is God and so on and so forth. The same man, a year earlier, or a few years earlier, had said in a public gathering in Tamil, in Kanyakumari, that we wear shoes so that Bharat Mata's impurities should not contaminate us. So that's the state of the civilization. And of course, our temples are not in our control. So the temple money is with the government. Thank God for the new CJI, who's actually said that all temple money belongs to the deity and you cannot do secular projects with it. This is an unprecedented judgment that has come out, and hopefully will give room, pathway into, this final liberation at some point in time in the future. There are many other battles that we have to fight. I mean, for example, Islamophobia. There's an international day to combat Islamophobia. There's a special envoy by the UN, and there are blasphemy laws being to counter Islamophobia being peddled by people like Raghav Chadha in the wherever he is in the Delhi Assembly. Yeah. Then there's battle for swastika. Thankfully now more and more countries are agreeing that the Nazi symbol was not swastika. So this is all happening because people are fighting. My colleague in Saryu Trust, Sufia Pathan, says that in 1947 we convinced that social justice must come at the cost of freedom and rights of some, to protect the marginalized. Instead of doing that, we are actually handed out weapons to various sections of society to use against each other. So that's another battle that we have to fight with this vile Ambedkarite movement, if you like. So overall, I know people have told me that how is the Ambedkarite movement connected with civil war and so on and so forth. So this is connected with the large and absolute demographic change owing to the Muslim population. But I'm just demonstrating that there are a whole lot of other problems. I believe, and I was at a conference today where I got a chance to speak for about 10 minutes, and I talked about an impending civil war. You must understand that this is, in Delhi last month after the Red Fort blast, 3,000 kilos of ammonium nitrate and RDX were caught. And that is enough to blow up the entire damn city and every big market in Delhi. Resin was extracted to inject it into temple laddus and fruits and distribute it to Hindus to kill them in lakhs. The resin is more toxic than cyanide. So if this is not a low-grade civil war, then what is? Just because they are caught and lakhs of Hindus did not die and more than one blast with 9 casualties did not happen, that does not mean that the civil war is not on. And I believe we are heading towards another partition. The situation is, I don't know how it is any different than it must have been in 1945, 46, 47.
So while the long-term solution is to revamp the design of the Indian state, which means changing the constitution, and obviously Viksit Bharat is, like I said, is not the only parameter. The other parameter should be, for example, in 2047, will stone pelting on Ramnavami Shobha Yatras be stop? Will Christianity say, oh, we make peace, we don't want Judgment Day anymore, it's okay, we all live happily ever after? Will we have a fearless society? Could I criticize Muhammad without my Sartan se juda, just as Ram or Manusmriti is criticized every day and burnt? My feeling is that the answer to these questions is that the Indian state nor any Hindu organizations are trying to solve this problem. Okay. Unfortunately, that is how I see things. So the only answer long term, like I said, is a state that protects, preserves, and promotes its homegrown knowledge systems, traditions, cultures, and values. In other words, you could call it a Hindu Swarajya of Shivaji Maharaj, or a Hindu Rajya, Hindu Rashtra, or a Dharma Rajya, as we call at Saryu Trust. While we get there, what do? हाथ पे हाथ धरे बैठकर तो नहीं बैठ सकते. So, and there are many people, thousands of them, fighting all over the country in whatever is their interest area to keep, preserve, protect, and expand the civilization. Preserve what we have, preserve and protect what we have, and expand the civilization. This is Mohit Bharadwaj with his brahmacharis, mostly from very poor families who've been given to the Gurukul in Sonipat because the parents could not afford raising the child. So they said, mostly Brahmanas, and they've just been given over ki chalo tum pal lo types. So he's building this Gurukul. Mohit is one of the Agnihotris in North India. He is reviving the Shakyayan Shakha of the Rig Veda prescribed for North India. And this was dying. Only two people got trained in this, him and one person called Abhijit. From the Hindu Fund, we've been funding both of them. One to run the Gurukul, and the other also to train brahmacharis at an independent, as an independent, and has some few brahmacharis. We don't fund Ashwini ji, but I'm generally talking about the him that people like him are fighting to at least get our Gurukuls recognized at par with madrasas and missionary schools. So people like them are fighting this battle. People like Ravi Ranjan ji has been the pioneer of halal and jhatka consciousness from a meat perspective, and halal mafia consciousness from a perspective of milk, ghee, masale, everything is halal. So there has been some movement. We've had some small victories. For example, Air India stopped marking on its food menus that they will have halal, the meat is halal. Or now Priyanka Kanungi, for example, has challenged, has sent a notice to the Indian Railways that you can't serve halal, and that's a. So things like that have happened. Vishnu Shankar Jain has got wuzu stopped for the last 300-400 years whenever this masjid was built by breaking the Kashi Vishwanath. Muslims have been washing their feet in this around this Shivalinga. They've drilled a hole into it, calling it a fountain. So Vishnu Shankar Jain has got this practice stopped. He's got the basement opened for puja again after 40-50 years. And then he's got the Sambhal surveyed. He's been fighting the Places of Worship Act. There are about 80 cases or something like that they've been fighting. Some are open, some are closed. And they've been doing this at the cost of their own practice. Hari Shankar ji and Vishnu Shankar Jain, for example. Richa has been fighting in Scotland for, bringing a Hinduphobia motion as well, for instance. And so that was approved by the Scottish Parliament some time back. People like ex-Muslim Sahil, I'll replace this picture with perhaps somebody more like Salim Bastik now. But this is just, metaphorical, if you like. There are hundreds of, not hundreds maybe, but 15-20 ex-Muslims across the country at least who are running their own channels, and they are great warriors. They have fear, but overcoming their fear, personal security, family security, they come and challenge Islam.
Tremendous job these guys are doing, and unfortunately giving 10 rupees and one Snapchat 500 one time, we Hindus do not fund them properly. From the Hindu Fund, we've been funding a lot of the ex-Muslims, ex-Muslim channels who run it, because they're doing a great job and they need to be supported financially. Even if they're using this for making money, as many people have written to me and said that, oh, they do it for money. Well, so be it. Let them do it for money. As long as they are serving our purpose, they should do it. And by the way, they're doing it actually for India. A large part of them are doing it for India, not for money. Not many people, do for 25, 30, 50,000 rupees, put their personal lives and the lives of their children at risk. So we are sometimes extremely small minded when we say these kind of things. There are people like Vimal who in Kerala, in Malappuram, has been rebuilding temples from this state to this state. Each project costs him 25, 30 lakhs. It used to be 10, 12, 15 lakhs earlier. And as the years have passed, the costs, of course, have increased. But he's on his 16th, 17th project. He has 160 temples documented, which were broken by Tipu Sultan during his raids in the Konkan or during Mupla riots. Murtis are broken, thrown into the well. He revives all of that. He reclaims encroached lands, mostly by Muslims, because it's a 85-90% Muslim area. And then he builds the temples, rejuvenating the community, which is mostly marginalized in Kerala, both from a money standpoint. They do lowly jobs in shops of Muslims mostly, and so on and so forth. But also, they're politically, Hindus are perhaps the weakest section of society in Kerala. People like Nupur Sharma and Rahul Roshan have created this Hinduphobia tracker. Of course, Rahul Roshan is the force behind all this, and Nupur is partner in crime, if you like, Nupur J. Sharma, not Nupur Sharma of the BJP. But brilliant work, right? What they've done is higher standards of journalism and documented hate crime against the Hindus. And now, recently, for example, they just sent out a tweet yesterday, if I'm not wrong, 104 documented hate crimes against Hindus in the last 11 days, from 1st December to 11th December. 104 cases. How many have you heard on TV? Probably none. So they pull out all this, use extremely high standards of documentation, research on whether they would want to classify this as a hate crime or keep it undecided, for example, right? And so that, unless you do these kind of things, you do not build institutions, you do not get credibility in the international, journalists. But journalists internationally, if they're not biased, would end up picking up this information only because it is now credible, right? So people like T.R. Rameshji have been fighting this freeing temples battle for 20 years, made some headway, pain in the ass to the HRNC department in Tamil Nadu. Pavitra Srinivasan has been, because of a guru wanting to do the 18 chapters of the Bhagavad Gita in Bharatanatyam. Parvati ji is keeping alive and reviving, and first time in Bengal has an ashram because of a guru's ask. That's a guru, bad picture, I'm sorry, who asked her to build an ashram to train people from all around the world in Baul. Our CA, we recommended the Hindu Fund CA, we recommended them to Parvati ji, and eventually he went to the ashram. He was very unsure whether he wants to service them and whatever, even at money. After visiting the ashram, I met him yesterday, and he said, Rahul ji, maza aa gaya wahan jaakar. What a place they have created, and very good you're supporting them. I will do whatever I can to help. So there are two broad things that I'm working on, other than a lot of other tactical projects. Two strategic projects is to create this Hindu fund, 1,000 crores, raise an endowment, and of course make Hinduism missionary again. I'll not talk about the second, we'll just focus on the first.
The idea is to make liberal grants, not ask 1,000 questions for 10,000 rupees, not humiliate people, not ask them for endless reports when we give them money. We ask for a report once in a year, once in 6 months, and so on and so forth. We are not irresponsible to our donors. We have to give reports, no doubt about that, how the youth funds were utilized. But the point is not to, they're already sacrificing a lot. And our questions can be very piercing, very hurtful. And so I'm tired of that. And I don't operate like that. And if any one of you give your money here, it will be used exactly with these principles to make liberal grants and to trust by default and evaluate over time. We will not be penny pinchers. We will not say that are you being efficient with your money? Yeah, let them be inefficient with their money. Let them learn on how to be efficient, because institutions have to be built. Far too many people come from the US, for example, when they're visiting India. They come to visit me and give me, hours of lectures on how strategically I should think and work more and do many more things. Unfortunately, yeah, other than that strategy, they have very little action to see on ground on what has been done or what they can do, and what versus what I've been doing for 10 years, for instance, right? So, I mean, we just talk too much, and I think we do too little. So that has to change, and that is the goal of the Hindu Fund. Um, Four broad areas that we are working on. There is a fourth area also, other than this, but I'm not going to talk about it right now. So legal work, manuscripts and inscriptions, and spiritual infrastructure. Spiritual infrastructure is about gurukuls, ashrams, rebuilding desecrated temples, and so on and so forth. Examples I gave already. We formed a special purpose vehicle called Manuscripts and Inscription Digitization Foundation. And any corpus we raise here, a large part of the money will be routed to that organization, which is now has an office in Dharwad in Karnataka. And in early January, it will be inaugurated, and hopefully we'll have some really big names from the Gyan Bharatam mission also come and be part of that. That's our hope, to become a privately run, small micro scale Gyan Bharatam mission. And I'm 100% sure we'll do far better than the hundreds of crores that the government pumps in versus the small amounts of money that we people have in MIDF. And of course, legal work. People like Vishnu Shankar Jain, people like Virinderji in Mumbai, or lawyers in Chennai, T.R. Ramesh, the lawyers who work for T.R. Ramesh, they should be able to bill at reasonable monies. We are not saying bill at your corporate fees, but bill us. Please bill the Hindu समाज. हम भूखे नंगे लोग नहीं हैं. सबको सेवा करके आपकी घर नहीं चल सकते सबके. So please bill us. That is the goal. Other than these three, we are actually starting a Sanatan Ghar Wapsi Foundation, as once again a single purpose vehicle like the MIDF, only with the goal of spreading the purpose of making Hinduism missionary. Basically Ghar Wapsi, but we are not going to do Ghar Wapsi. So these kind of initiatives is what we are raising money for. And then there is about 2.5, 3 crores that already goes to an ad hoc set of projects, tens of projects that are supported. And that's where the money goes. Why am I saying 1,000 crores and this 25 crores? 1,000 crores is very large. At least get started with the first 25. We are nowhere right now. We don't really have an endowment at this point in time. Whatever comes goes out. There's probably nothing in endowments at this point. But what if we do get an endowment fund of this size? Then what will happen is that you deploy this in markets for about 18 months, and you can get about 2.5 crores annually, from growth of the money that Indian markets can fairly easily deliver. 10-12% is just an index Nifty 50 fund will deliver that. And that's the hope, right? So create a core fund, a corpus, and eat from the growth of the market and write checks to people. So yeah, that's the type of projects that I already spoke about. Banning FCRA, for example,
This government has actually completely, very sadly, even stopped publishing data since 2021 of all the foreign contributions that come into the country. So we are going to be challenging that. In fact, the larger thing we are going to go after is to completely outright terminate FCRA. We don't want foreign money coming into the country. We have 34,000 crores of CSR money. And go look at the data that's coming in the last few days, just last 2 or 3 days. There's a whole lot of tweets and LinkedIn posts talking about 16,000 crores going into education. Understand, please, that most of it goes into Christian organizations once again. So not only 27,000 estimated 1,000 crores comes from Christian sources to Christian destinations in India under FCRA, but another 16,000 we only give. So under MIDF, for example, just switching topic to that, we are funding two big projects. One, Epigraphia Indica in Karnataka. This was published in 1886, and still, as of today, 140 years later, we only have scanned copies of it. There is no digital version of the Epigraphia Indica available. So you can't search, you don't have it Unicode, you can't refer to it, so on and so forth. You have to scan through PDFs, which are images basically. Neelakanthya Mahabharata is a critical edition coming from the Parampara tradition. This is not the Bori tradition. So I don't remember the number of shlokas, but I think about 286 shlokas from the Mahabharata are missing in other verses than Neelakanthya, which comes from the Parampara. So we are actually documenting this as well as others, making it all searchable so that comparisons can be made. The person who's doing this has built the Advaita Sharada for Sringeri Mutt. And it is, so those are the two big projects we are funding at this point in time. Other than funding two brilliant people, Ashok Dumlur and Chetan Pandey, who actually are scanning all sorts of things in all sorts of places. For example, Chetan Pandey is right now scanning the entire Nepal Maharaja library. It's a 1-year project and we've given him a grant for 1 year. So once again, sorry, this is a little dated, Neeraj, you have to help me update this. I think this is about 120 organization and the money is a lot more that has been done. And even the recurring is about 2.5 crores to 3 crores probably annual that we are spending. There's a board, not a board, but a governing council. And so I asked for money in a lot of the other people, not only in my name. Anand Prasad is one of the top lawyers in the country, founder of Trilegal. This is the Mohandas Pai family. That's Vijayaji. Vijaya is the Uttaradhikari of Infinity Foundation. From Rajiv Malhotraji. He's a great coach, one of the leading coaches in India. There's a retired army officer, Major General Bhatia, Ramakrishna Math Sannyasi, Swami Ved Tattvananda. Sudarshan heads the MIDF and also is a governing council member here. So all, sort of requests for us for grants that come on for manuscripts or inscriptions goes to Sudarshan and then eventually to MIDF to figure out whether they want to fund it or no. So he's a scholar of Sanskrit. He's right now teaching Sanskrit to monks, Buddhist monks in Sri Lanka, and teaches them in Indonesia. And he's doing his research under Professor R.N. Iyengar on history of ancient Indian science. So without money, no dharma can be protected. We have to remember that. Dharma ka mool arth hai, dharmasya moolam artha. And this is some data that I just put on the screenshot. Neeraj gave it to me 2 minutes before the call. Of course, this does not cover sort of grants that are coming from me or Saryu Trust. That's correct, right, Neeraj? So just to add, the inflow is 1.53 CR. The outflow is 6.88. Yeah. So 6.88 So crores. Yeah, sorry. the balance is met by you. Yeah. So that's gone out. And so, but that's a money it's coming in. At least some encouraging thing that, well, I'm not too sure. So it grew to about 3.6, 3.5 to 3.9, back to about 2 lakhs. So which means that people join, but a lot of people exit. And this is really the problem. Many people say, oh, you want to raise 1,000 crores, but what can we do? Well, you can start a contribution of whatever amount. Ideally, I ask for 7%, 5%, 10%, something of your monthly income and contribute to the Hindu fund. None of us here
take a single rupee from the Hindu fund. Neeraj is on payroll in Saryu Trust. I, of course, don't take money. There's only the social media agency which we pay via the Hindu fund for any money received, other than writing grants. So it's probably 99.5% utilization. Only 0.5% or something goes into administrative things, and that's also social media and the Shubchintak WhatsApp group, all the posts and things that you receive. So that's our status. In one-time grants, we received 1.36, and collectively of all the little recurring donations we get was probably 17 lakhs. But well, it's a good start. But hopefully, if people who are becoming donors learn to stick and not quit after 1 month or 2 months and say, oh, let me do something else. I don't know what they're doing with my money. तो मैं अपना जर्नी तो ब्रीफली 2-3 मिनट में आपको बताता हूँ। जर्नी कुछ नहीं है कि जब मैं 18 वर्ष का था तो अपने जब गुरु से मिला तो उन्होंने मुझे वॉइस ऑफ इंडिया, जो भारत के दो बड़े संत रहे, स्कॉलर सेंट्स रहे, श्री राम स्वरूप जी, श्री सीताराम गोयल जी, उनकी पुस्तकें वॉइस ऑफ इंडिया जो पब्लिकेशन है वो पढ़ने को दिया। और वहां से एक तरह से मेरा हृदय परिवर्तन नहीं कहेंगे, फिर से धर्म परिवर्तन हुआ, क्योंकि उस समय तक मैं वामपंथी, जिस तरह के हमारे देश में जो माहौल है, तो की आयु में लगभग सब जो विचार हैं वामपंथी होते हैं थे। और उसके बाद हम फिर से हिंदू धर्म की ओर मुड़े। और एक बार जब आप समझते हैं कि आपके धर्म पर कितना संकट है, आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने कितने, हर जनरेशन में, हर पीढ़ी में किस कष्ट से धर्म को, इस सभ्यता को बचा कर रखा है, समाज को बचा कर रखा है। तो मैं कहता हूं कि एक बार आप सीताराम जी, एक बार श्री राम स्वरूप जी के जब उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनके विचार से अवगत हों, तो एक आपके कंधों पर अपने आप ही एक बड़ा अच्छा बोझ आ जाए। बोझ को मैं इस नकारात्मक रूप से नहीं बोल रहा। आपको ऐसा लगता है कि अब तो आप, ये असंभव है कि आप धर्म के लिए कुछ ना करें। जब आप ये जान गए हैं ये सब कि ये हो रहा है, हमारा समाज, हिंदू समाज किस प्रकार से संकटों के घेरे में है। सीताराम जी ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंदू समाज संकटों के घेरे में, और पहला उसमें वाक्य वो लिखते हैं कि हिंदू समाज को नहीं पता कि वह संकटों के घेरे में है। और 45 वर्ष बीत चुके हैं आज उस बात को। अच्छी बात यह है कि आज बहुत सारे अधिक लोग हैं हिंदू जिनको ये पता है कि संकट में है हिंदू समाज, परंतु अभी भी पर्याप्त लोग नहीं है। ये दुख की बात है और इसको आगे बढ़ाना है। तो बस ऐसे ही करके इस पथ पर हम आगे चले। लगभग 2011-12 में इंडियन इंस्पायर्स करके एक संस्था, जो मैं उसमें को फाउंडर था, जब पहली बार मीनाक्षी जी, कपिल कपूर जी, इस तरह के जो स्कॉलर्स हैं उनको हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद इंडस यूनिवर्सिटी में मैं 5 वर्ष काम किया, जिसमें बहुत से इंडिक साइट से हमने बनाए। और पिछले 3-3.25 वर्ष से बृहद करके एक संस्था थी जिसका मैं को-फाउंडर था। तो वहां पर हमने बहुत सारे कल्चर और पॉलिसी के ऊपर काम किए। वहीं से ये जो हिंदू फंड है, या राहुल से संगम टॉक से हिंदू जो फंड है, इससे ग्रांट्स मिला 2 प्रोजेक्ट के लिए, जिस पर मैं थोड़ी सी विस्तार में बात करूंगा आपसे, 7 से 8 मिनट में बात करूंगा। उस काम को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। 1 दिसंबर को हमने एक नई संस्था खोली है, 5 लोगों ने, बोध करके, जिसमें ये बहुत फोकस से, बहुत तेजी से फोकस से ऐसे ही काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। राहुल की आप प्रेजेंटेशन में आपने जो घर वापसी का जो एक विषय देखा होगा, और भी कुछ थे, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं ब्रीफली प्रेजेंट करता हूं बोध में हमारा फोकस क्या है, और इस समर्थन से जो हमें ये फंड मिला, उससे हमने अभी तक क्या किया है पिछले 1 साल से, और आगे हम उससे क्या करने वाले हैं, क्या फोकस। हम अपने आप को बहुत स्पष्ट रूप से एक थिंक टैंक रिसर्च ग्रुप कह रहे हैं, फोकस्ड ऑन कंटेम्पररी इश्यूज ऑफ कल्चरल कंसर्न, वर्किंग टू इन्फॉर्म कोर एरियाज ऑफ पॉलिसी विद विजडम ड्रॉन फ्रॉम हिंदू ट्रेडिशन। और हम ओपनली हम ये कहते हैं कि हम हिंदू कॉजेस के लिए ही काम कर रहे हैं, उसमें कोई वी आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम इट। We advance intellectual churn within the Hindu Renaissance and curate cultural experiences of core Hindu institutions such as the Hindu temple. तो ये हमारा लक्ष्य है। इसमें जो रिसर्च है, देखिए 2 एरियाज, मेन एरियाज हैं जिस पर हम फोकस करेंगे और कर रहे हैं। तो आप राइट हैंड साइड पे जो देखें, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में, तो जो हिंदू फंड से हमें जो समर्थन मिला, जो सपोर्ट मिला, उससे पिछले वर्ष हमने, जब मैं बृहत में था, एक हमने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, बैटल फॉर धर्म इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में आप जानते हैं कि क्रिश्चियनाइजेशन, कन्वर्जन बहुत तेजी से चल रहा है,
और अब सेवन सिस्टर्स उन स्टेट्स को कहा जाता था, अभी उसमें 8 एक ब्रदर मतलब सिक्किम को भी उसमें जोड़ दिया गया है। और वहां पर जिनको हम संविधान में जनजातियां कहते हैं, ट्राइब्स हैं, उनका बाहुल्य, बहुत सारी वो जनजातियां हैं। कई बार तो इतने छोटे नंबर है, कुछ 10,000 की एक ट्राइब है, कुछ 1 लाख की है, 1.5 लाख की है। यहाँ पर कन्वर्जन बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत अगर मैं 30 सेकंड में आपको बताऊं तो नागालैंड 90% से अधिक ईसाई है, मिजोरम 90% से अधिक ईसाई है, जिसमें मिजो कम्युनिटी लगभग 99.99% ईसाई है। मेघालय कुछ 75% ईसाई है। मणिपुर 50% ईसाई है। अरुणाचल जो पिछले 2011 का जो डेटा है उसमें 37% ईसाई है। तो अभी अगर आप 2026 में देखेंगे 15 वर्ष बाद, तो मुझे लगता है कि 40-42 तक लगभग, ये बात कंजर्वेटिव एस्टिमेट है कि वहां पर ईसाई हैं। और जो कुछ ईसाई संस्थान है उनका तो ये दावा है कि अरुणाचल भी अब 50% से ऊपर, 55 के आसपास, 53 से 55% ईसाई है। तो अब हमारे यहाँ 5 ईसाई मेजॉरिटी स्टेट्स हैं। ये हिंदुओं को पता ही नहीं रहता, हिंदू मेजॉरिटी के हम उसमें बहुत डूबे हुए हैं, परंतु 5 ईसाई मेजॉरिटी स्टेट्स हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो अगर ये एस्टिमेट सही है तो हमारा ये विचार, मेरा ये विचार था कि इसमें ग्राउंड पर क्या है, क्योंकि अगर आप पढ़ने जाएं इनके बारे में, पुस्तकें 200 से अधिक जनजातियां और ट्राइब्स हैं, अगर आप उनकी बुक्स पढ़ने जाएं तो मोस्टली वो क्यूरेटेड रहती हैं चर्च से। और इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है कि अगर कोई वहां पर स्कॉलर एक क्रिश्चियन सोसाइटी में स्टडी करने जा रहा है तो चर्च की काउंसिल वेट करती है कि जो वो लिख रहा है वो पहले वो चेक करते हैं, उसके बाद उसको आगे आने देते हैं। तो जो डेटा हमें उपलब्ध है, जो बुक्स हैं, वो बहुत ही क्रिश्चियन लेंस से लिखी गई हैं, जिन्होंने पूरी व्हाइट वॉश किया है हिस्ट्री को कि कन्वर्जन इसलिए हुए क्योंकि उनके बहुत सुपरस्टिशन था, बहुत अंधविश्वास था, बहुत वायलेंस थी, बहुत मारकाट थी। और हिंदू तो उनको ठगते थे, जो प्लेन्स के हिंदू थे वो तो आके उनको ठगते थे। इस कारण से क्रिश्चियनिटी आई, चर्च आए, मिशनरीज आए और उन्होंने बहुत सहायता की। तो इस तरह का नैरेटिव वो चलाते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये था कि हम ग्राउंड पर जाके इसकी स्टडी करें और एक घर वापसी का मॉडल तैयार करें कि वहां पर जितनी कम्युनिटीज हैं उनमें किस स्टेट में कैसी स्थिति है और क्या संभावना है, और जो संभावना है वो कैसी है। जिस प्रकार से मेघालय में, अरुणाचल में कुछ ऐसे समुदाय हैं जहां पर घर वापसी भी हो रही है, तो जहां पर हिंदू समुदाय में वापस भी आ रहे हैं और अपने इंडिजिनस जो अपने उनके प्राकृतिक धर्म है उनको वो पुनः पूजने लगे हैं। बहुत इस बार जो मैं पिछले वर्ष, अभी कुछ पिछले वर्ष नहीं, पिछले मास क्या 10 से 12 दिन पहले मिजोरम में था और वहां पर हम एक कम्युनिटी से मिले। मिजोरम में मिजो जो कम्युनिटी थी, मिजो जो समुदाय है, वो 100% कन्वर्टेड हो गया था। पर फिर उसमें से एक कुछ कोर जो है, कुछ लोग, उन्होंने क्रिश्चियनिटी छोड़ी, वापस से अपने मंदिर बनाए, वापस से अपनी पूजा पद्धति को स्टार्ट किया, चालू किया। और अब वहां लगभग 600 से 1000 के संख्या है जो ईसाई उन समुदाय में से निकल के और अपना अलग काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का, उनकी क्या कठिनाइयां हैं उनको सपोर्ट में, क्योंकि जब मैं उनसे जाके मिलता हूं तो कहते हैं कि बहुत कम, हमें कोई ध्यान ही नहीं देता है कि हम जीवित भी हैं, हम ऐसे लोग भी हैं नॉर्थ ईस्ट में। सब समझते हैं कि ये सब क्रिश्चियन है और हमको कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो ये जो बैटल फॉर धर्म में नॉर्थ ईस्ट से जो स्टडी हम बोध के द्वारा हम कर रहे हैं, इससे पहले तो ग्राउंड की स्थिति पूरी, कि ग्राउंड पर क्या स्थिति है, दूसरा और कितनी बुरी स्थिति है, दूसरा कि कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनसे हम उनको वापस ला सकते हैं, क्या सिद्ध हो रहा है, वहां पर जो समुदाय हैं उनकी सहायता, जो दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में जो लोग हैं जो हिंदू इश्यूज से प्रेरित हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे मैं मेघालय के एक, मैंने चर्चा भी कई वीडियो में भी की है, मेघालय की एक ऐसी बुरी स्थिति है कई स्थान पर कि वहां पर 6 शेड्यूल का स्टेट है, तो आप जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो बिना परमिशन के लैंड नहीं खरीद सकते, तो वो लीगल नहीं है। तो उसमें जो बंगाली हिंदू कम्युनिटी, बॉर्डर है मेघालय का, बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, जो बांग्लादेश से जो बार बार बंगाली हिंदू कम्युनिटी, थोड़े बहुत कुछ जो लोग भागकर मेघालय में बसे, तो जब तक फेंसिंग नहीं हुई थी बॉर्डर की, भारत बांग्लादेश बॉर्डर की, तब तक वो अपने जो डेड बॉडी है, जो मृत हैं अपने, उनको वो बांग्लादेश में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस के वहां जलाते थे, क्योंकि यहाँ की जो ईसाई कम्युनिटी है, चर्च उनको जलाने नहीं देती थी भारत के अंदर, मेघालय के अंदर, तो वहां जाकर जलाते थे। पर जब वो पूरी फेंसिंग हो गई तो उनके लिए यह भी असंभव हो गया। और अब उनकी इतनी बुरी स्थिति है कि एक नदी है सोमेश्वरी जो मेघालय से होकर बांग्लादेश में जाती है, उस नदी का ये बीच में जो सैंड बैंक है, जो बीच में रेत है, उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर ऐसा है कि थोड़ा सा हिस्सा बीच का बांग्लादेश का पार्ट आता है जहां पर फेंसिंग नहीं है। तो ये रात को, आधी रात को, जब भी कोई किसी हिंदू की मृत्यु होती है तो आधी रात को वो जाते हैं,
पानी में तैर कर जाते हैं, आधे पानी में धड़ तक, और वहां पर सैंड बैंक क्रिएट करते हैं, गीली रेत को इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर एक लकड़ियां रखते हैं और वहां चोरी छुपके से जलाते हैं। उनको वहां लैंड खरीदने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे कई स्थान पर ये समस्या है। तो ऐसे लोगों को लीगल हेल्प देना, ऐसे लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देना, जैसे हाजोंग का ये जो आप पॉलिसी स्ट्रेटेजिक अफेयर में 4 नंबर पे जो आप देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ हाजोंग, ये एक हिंदू कम्युनिटी है मेघालय की, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, बट क्योंकि ये गर्व से अपने आप को हिंदू कहते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, काली की पूजा करते हैं, तो कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इनकी स्टडी नहीं करता, ये कहते हैं ये तो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसका क्या अर्थ है? तो इसमें कोई इंटरेस्टिंग कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरेस्ट इनके अंदर बचा नहीं है, तो उनके ऊपर प्रॉपर स्टडी भी नहीं है। दूसरा, उनकी इतनी बुरी स्थिति है, लगभग जैसे इसमें से बहुत सारे लोग वुड कटर्स हैं, लकड़ी काटते हैं, तो लकड़ी काट के ये जहां बेचते थे, तो वहां पर चर्च ने 7 किलोमीटर दूर ये कहना चालू कर दिया उनसे कि हम आपसे तब लकड़ी खरीदेंगे अब जब आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इतना आप उनका स्ट्रगल है कि वो तब भी कन्वर्ट नहीं हुए, 25 किलोमीटर दूर जो है लकड़ी जाकर बेचने लगे। तो ऐसे स्थिति है, उनकी सहायता करना, उनको आर्थिक रूप से सहायता करना, उनके बच्चों को दिल्ली मुंबई में पढ़ाने भेजना, उनको जॉब दिलवाना, इस तरह के जो नीड केस हैं उनको कनेक्ट करना, इस प्रोजेक्ट का काम है जो हिंदू फंड ने हमें सपोर्ट किया। ये 1 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, 1.5 से 2 साल इस पर और काम होगा, और इसके कई आउटकम होंगे। जो सीधा कनेक्ट करना है, जो मैं आपसे अभी बात की, नीड केस को यहाँ पर जो लोग हेल्प कर रहे हैं वो तो करना ही है। उसके बाद एक पूरी प्रॉपर रिपोर्ट, एकेडमिक रिपोर्ट की नॉर्थ ईस्ट में ग्राउंड पर क्या काम हो रहा है, और दूसरा पॉपुलर बुक जिससे सब जाने, सारा हिंदू समाज ये समझे कि वहां पर क्या हो रहा है। तो ये उसके आउटकम होंगे। इसी तरीके से फ्री हिंदू टेम्पल्स की अभी हमने प्रेजेंटेशन में देखा, जो बात किया, तो हिंदू मॉडल्स ऑफ टेम्पल मैनेजमेंट हमने एक स्टडी अभी चालू कर दी है। पिछले 6 महीने में हम इस पर स्टडी पहले पुराने संस्थान में कर रहे थे, अब बोध में इसको हमने और गति से इसको चालू कर दिया है। इसका लक्ष्य यह है कि हिंदू कम्युनिटी रन जो टेम्पल मैनेजमेंट मैनेज्ड है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं पूरे भारत में जो हिंदू कम्युनिटी ही पूरी तरह रन करती है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो वो किस प्रकार से अपना सुचारू रूप से अपना एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट चला लेते हैं, इसकी स्टडी हम इस स्टडी में कर रहे हैं। और ये भी संभव हो पाता है कि जैसे हम आगे जो हिंदू फंड ने जो हमें सपोर्ट किया है और आगे जिस तरीके से हम काम करेंगे, तो इस तरह के मॉडल्स, इस तरह के रिसर्च जो है हम कर रहे हैं। लक्ष्य ये है कि अभी तक हम जब रिप्लाई करते हैं, जैसे कोई हमसे प्रश्न पूछता है, मिशनरीज और दूसरे जो लेफ्टिस्ट हैं, कि तो हमारा जो रिप्लाई होता है वो इमोशनल और एनेक्डोटल रहता है। हम कुछ कथा सुनाते हैं और अपने इमोशन से बात करते हैं, जो कि ठीक है, उसमें कोई खराब बात नहीं है, परंतु बहुत ठोस एक्सपेरिमेंटल फील्ड रिसर्च अभी हमारे पास कम है। जिस प्रकार से धर्मपाल जी से जब कहा गया कि हिंदू समाज शिक्षित नहीं करता अपने स्वयं अपने बच्चों को और अपने बालकों को, तो उन्होंने उसका केवल एक एनेक्डोटल या इमोशनल रिप्लाई देने के बजाय भारत के 3 बड़े क्लस्टर स्टडी किए, स्टैटिस्टिकल डेटा निकाला, मैट्रिकल डेटा निकाला, जो आज भी हम कोट करते हैं। तो हमारा प्रयास ये है, इसी को हम इंस्टीट्यूशनल रूट्स कहते हैं, कि जब हम इस तरह के काम करेंगे और सीधे हिंदू समाज की सहायता लेके करेंगे, तो उससे इस तरह के स्कॉलरशिप क्रिएट होगी, मेथोडोलॉजी क्रिएट होगी सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में, और उसके ऊपर ऐसे स्कॉलर्स क्रिएट होंगे, इंस्टीट्यूशनल रूट्स हम डिग इन करेंगे, कि जिससे आगे जाकर राज्य हमारे साथ है या नहीं है, उसके बाद भी ये काम बहुत द्रुत गति से, बहुत तेज गति से ये आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार के ये सारे प्रोजेक्ट बोध के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप दूसरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसमें हिंदू चैरिटी का, हमसे कहा जाता है कि हम चैरिटी नहीं करते, परंतु हिंदू समाज बहुत चैरिटी करता है, हम सब जानते हैं। तो हमारा प्लान इसमें यह है कि 1.5 से 2 लाख वाला एक छोटा सा टाउन हम चूज करें, 1 साल में कैश, काइंड और सर्विस में वो कितनी चैरिटी करते हैं, उस पर ट्राइंग टू पुट अ नंबर, उसको एक मॉनेटरी नंबर हम दिखाएं कि इतना हिंदू समाज हम चैरिटी करते हैं, फिर उसको आइटरेट करें पूरे देश में। तो इस तरह का स्टैटिस्टिकल, जो नूपुर शर्मा का भी उदाहरण लिया राहुल ने, कि किस तरीके से बहुत एकेडमिक स्टैंडर्ड से उन्होंने इसको एक डेटाबेस क्रिएट किया, कि हम जब आगे जाके नैरेटिव बिल्ड करें, ट्रुथ बेस्ड नैरेटिव बिल्ड करें, तो उसके पास हमारे पास ये डेटा हो, मैट्रिकल स्टैटिस्टिकल डेटा हो, एकेडमिक रिसर्च हो, फील्ड रिसर्च हो, जिनके ऊपर हम ये सारी बात कर सकें, और इसका एक पूरा परंपरा बने, इसको ट्रेडिशन बने, और धीरे धीरे ये इतना स्ट्रांग हो जाए कि आज से हमारा कल्पना यह है कि 30 वर्ष बाद अगर कोई स्कॉलर इस दिशा में काम करने आए, तो उसके लिए जो समस्या हमको फेस करनी पड़ रही है, उसके लिए नैरेटिव बिल्डिंग बहुत आसान हो, सच जानना आसान हो, सच के ऊपर दूसरों में अवेयरनेस, चेतना फैलाना बहुत आसान हो। ये
हमारा लक्ष्य है। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा बिग क्वेश्चन का हमारा एक प्लान है कि हम हर साल एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदू समाज फेस कर रहा है, हम उसको समाज के सामने लाएंगे, जो हमारी कोर प्रॉब्लम है, लेकिन उस पर जो कई सारे जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स, थिंकर्स, एक्टिविस्ट, ग्राउंड एक्टिविस्ट जो हैं वो अलग अलग मत रखते हैं, उन सब मतों को एक साथ लाना और उसका एक फॉरवर्ड, एक इंट्रोडक्शन देना कि हमारा जो हिंदू इंटेलेक्चुअल अरीना है किसी एक अमुक प्रश्न के बारे में क्या सोचता है, ये हम इसमें परसू करेंगे। जैसे पहला प्रश्न, व्हाट इज द कोर ऑफ सनातन धर्म, हम सुनते रहते हैं, परंतु कोर क्या है, ये अलग अलग विचारकों, स्कॉलर, एक्टिविस्ट, इन सबसे हम पूछेंगे। व्हाट डज बीइंग इंडियन मीन, व्हाट विल डिस्ट्रॉय हिंदू सोसाइटी, ऐसा कौन सा विचार है जो हमारे समाज को नाश कर सकता है और हमें इसको प्रिवेंट करना है। व्हाट आइडिया मस्ट डाई फॉर हिंदू रेनेसा, व्हाट विल सेव सनातन धर्म, इज हिंदू यूनिटी कंपैटिबल विद इंडियन डाइवर्सिटी। हम बात करते रहते हैं कि भारत में बहुत विविधता है, परंतु हिंदू यूनिटी से ये विविधता समाप्त होगी। तो ये इन सारे प्रश्नों के अलग अलग उत्तर, अलग अलग जो हमारे प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट, थिंकर्स हैं, उनसे हम लेंगे। तो ये इकोसिस्टम बिल्डिंग का एक छोटा सा प्रयास रहेगा। बोध एकेडमी में जो इंस्टीट्यूशनल रूट्स, राहुल ने भी बात की कि हमें डिग अप करना चाहिए, हमें जड़ें पकड़नी चाहिए कि हम संस्थागत काम कर सकें। तो उसके लिए हमने बोध एकेडमी का जो रिसर्च कर रहे हैं, मेरी टीम मैं आपको बताऊंगा, तो हमारे अभी 3 प्राइमरी रिसर्चर्स हैं, पर हम ये चाहते हैं कि आगे हम हर वर्ष 2 से 5 स्कॉलर्स को हम ट्रेन करें, और ट्रेन केवल थ्योरी में नहीं, उनको रियल प्रोजेक्ट्स पर, ग्राउंड फील्ड रिसर्च में उनको भेजें, सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में उनको हम डीपली लगाएं, हिंदू व्यू ऑफ, हिंदू मेथोडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ये विकसित करें, वो उनको टेम्पलेट दें जिसके ऊपर वो एक वर्ष दर वर्ष इस तरह के और रिसर्च करते जाएं, जिससे हमारा डेटाबेस और स्ट्रांग होता जाए। भारत को अगर तोड़ा गया है नैरेटिव से, तो गलत इतिहास लिख के जितना तोड़ा गया है, उससे भी अधिक गलत सोशियोलॉजी और गलत एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करके, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज करके वो किया गया है। उसको कैसे रोकना है, कैसे दूसरी दिशा में मोड़ना है, इसके लिए बोध एकेडमी का ये प्लान है। हमारे अन्वेषी कल्चर टूर्स हैं, इसके हम 4 से 5 दिन लोगों को किसी एक टेंपल क्लस्टर में ले जाते हैं, मंदिर में दर्शन करने का ठीक ढंग क्या है, स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी, आर्किटेक्चर के बारे में, और जो बाकी सामाजिक समस्या भी उससे रिलेटेड है, उससे हम समझ सकते हैं, उनके बारे में भी हम बातचीत करते हैं। ये भविष्य में हमारा प्लान है, और हम 12 ऐसे टूर पहले भी कर चुके हैं। हमने अपने आप को, ये पब्लिक के सामने है, 1, 3, 5 और 10 वर्ष में हमने अपने आप को लक्ष्य दिए हैं। फुल 100% पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की, हमको जो फंड आ रहा है, हमको जो सपोर्ट आ रहा है, उस सपोर्ट से हम क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने हम बड़े वैलिड गोल्स आपके सामने रखेंगे, और ये कोई भी इसको चेक कर सकता है। तो ये बोध का प्लान है। बोध में हम हमारी ये टीम है, 5 लोगों की टीम है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम, मेरे को फाउंडर है अमृतांशु पांडे, अक्षय झा, और फिर 2 और मेंबर्स हैं, पद्मावती मना और अंकित मिश्रा। तो ये हम 5 लोग हमने बोध का को स्टार्ट किया है। प्रोजेक्ट का जो फंड है, जो हम नॉर्थ ईस्ट पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब बहुत तेजी से हम बोध में उसको आगे फॉलो करने वाले हैं। और इसी तरीके से मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी, क्योंकि हम एक नई संस्था भी हैं, इस तरह की संस्थाओं को हिंदू फंड सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप उस फंड को सपोर्ट करते हैं, तो हम जैसी बहुत सारी संस्थाएं जो समाज के ऊपर ही आधारित है, हमारा लक्ष्य है, हम राज्य पर आधारित नहीं होना चाहते। हम ये मानते हैं कि अब ऐसी स्थिति आ चुकी है भारत में, हिंदू समाज में, कि ऐसे छोटे छोटे संस्थानों को, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल रूट्स दिख कर रहे हैं, संस्थागत जड़ें जो हैं वो पकड़ रहे हैं, जिससे कि आगे जाके सिस्टम हमारा हो। कश्मीर फाइल्स का एक बहुत फेमस सेंटेंस है, वो आप डायलॉग आप सबको पता है, कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा, एक वामपंथी ये कहता है। तो सिस्टम हमारा हिंदुओं का कैसे बनेगा, उसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल रिगर डेवलप करना पड़ेगा, एक के बाद इंस्टीट्यूशनल रूट्स हमें डिग इन करनी पड़ेंगी। यही हमारा लक्ष्य है। वो एक छोटा सा प्रयास है, ऐसे बहुत सारे प्रयास को हिंदू फंड सपोर्ट करते हैं। तो आप जितना इसको फैलाएंगे, जितना इसको सपोर्ट करेंगे, हम जैसे संस्थान ऐसे प्रोजेक्ट और आगे बढ़ते जाएंगे। सारे हमारे ग्रांट्स जहाँ जहाँ जाते हैं हम यहाँ पर पब्लिश करते हैं। hindu.fund की वेबसाइट है, और एक हमारे पास व्हाट्सएप पे शुभ चिंतक ग्रुप है, जिसमें हम आप सबको ऐड कर देंगे, जितने भी नए मेंबर्स हैं, ताकि आपको ये 3-4 अपडेट्स हर हफ्ते में वो मिलते रहें। बाकी सारे ग्रांट्स आज तक जो 2016-17 से हमने दिए हैं, वो सारे यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो आप एक्चुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को
कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपको ये फंड मिला या नहीं मिला, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो आप जाकर देख सकते हैं कि इस साल में अभी तक, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने फंड्स अभी तक गए हैं। जैसा मैंने बताया, ये ई गंगोत्री अपना मैन्युस्क्रिप्ट्स वाला फंड है। अब हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, नूल पिरई फाउंडेशन है, उसको फंड दिया। आई थिंक यहाँ पर अभी लिस्टेड नहीं है, उन्होंने फर्दर ई गंगोत्री को दिया है। तो ऐसे करके ये सब यहाँ पर लिस्टेड है, लाइक आई सेड। सो ये आप हर ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। दैट इज़ द ट्रांसपेरेंसी वी मेंटेन। फंड्स आ कहाँ से रहे हैं वो अभी हम पब्लिश नहीं करते, देखेंगे बाद में करना है नहीं। और जो मैंने आपको अपनी प्रेजेंटेशन में डेटा दिखाया था, ये भी हम धीरे धीरे, अभी थोड़े रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो रही है टू मेंटेन द वेबसाइट, बट वी विल स्टार्ट पब्लिशिंग ऑल दिस डेटा ऑन द वेबसाइट एज वेल। मेरा नाम रितिका है, मैं हैलिफैक्स से ज्वाइन कर रही हूँ आप लोगों को। मैंने पंकज जी की बुक पढ़ी स्वयंबोध और शत्रुबोध, उसके बाद में मैं आई संगम टॉक्स पे, एंड दैट्स हाउ आई गॉट एडेड इनटू द शुभचिंतक ग्रुप। मेरा मन बहुत है इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपका जो कॉज है राहुल जी, बट इसमें अभी जो ऑप्शन आ रहा है वो रेजर पे के थ्रू ही आ रहा है। तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं, अगर मेरे को कनेडियन बैंक के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं मंथली कंट्रीब्यूशन के लिए साइन अप कर सकती हूँ, या पेपल के थ्रू? वी हैव और हमारी हिंदू नेटवर्क फाउंडेशन यूएस बन चुकी है, उसमें अप्रूवल्स हैं, वो अभी आई थिंक वेबसाइट के कंस्ट्रेंट्स हैं। आप वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ से मनी भारत में लाना अभी हमारे लिए डिफ़िकल्ट है फॉर एनी इंडियन कॉजेज, बट बाहर के लोगों को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोनराड डेल्स को पैसे ऑलमोस्ट हर महीने, हर दूसरे महीने पैसे भेजने होते हैं। तो वो जो वॉइस भी ऑफ यूएस या बांग्लादेशी वो हिंदूज। बांग्लादेशी हिंदूज को, ऐसे सब जो भारत के बाहर की लोग हैं जो बढ़िया काम करते हैं, दिखते हैं और रीच आउट करते हैं, उन सबको भेज देते हैं हम यूएस से। आपसे इंस्पायर होके हमने यहाँ पे जो है एक ओल्ड मंदिर रिवाइव करना शुरू किया है। कनाडा में बहुत छोटी सी जगह है नोवा स्कॉशिया, और उसमें भी एक बिल्कुल आइलैंड के पास में एक डॉक्टर आए थे 1969 में, उन्होंने टेम्पल इस्टेब्लिश किया था। कनाडा का वो शायद पहला टेम्पल था, वो बंद हो गया था। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड रिवाइविंग इट, उसकी बेसिक रिपेयर्स हमने करी हैं, और इस स्प्रिंग से, स्प्रिंग 2026 से वी विल बी डूइंग puja path and organizing the functions and pujas for the local people. So this is what I wanted to share. हेलो सर, नमस्कार। तो एक्चुअली रिसेंटली मैंने ये एक न्यूज पढ़ी कि गौतम अडानी ने 20 करोड़ एलोकेट किए फॉर हिंदू रिलेटेड एक्टिव सम सच थिंग। तो मेरा जस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन ये था कि सर आप लोग तो मतलब 1000 करोड़ का मतलब बहुत बड़ा टारगेट लेकर चले, तो अगर अनलेस हम लोग ऐसे बिलियनियर लोगों से कांटेक्ट करते हैं तभी हम ये कर पाएंगे, तो ऐसा आप कुछ कर रहे हैं क्या सर? कॉन्फ्रेंस में भी था, अडानी इंडोलॉजी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर गौतम अडानी जी ने ये अनाउंसमेंट करी, मेरे साथ से गुजर के निकले थे, इतने सिंपल आदमी, बड़ा अच्छा लगा देखकर। बात नहीं कर पाया, मगर जो जो उनके ऑर्गेनाइजर हैं श्रीनिवास राव जी, उनसे कनेक्टेड है, नीरज भी कनेक्टेड है। तो हाँ, हम उनको पिच मार रहे हैं अडानी को, ग्रुप को, ताकि फॉर ओनली मैन्यूस्क्रिप्ट, उन्होंने जो कमिट करा है वो 20 नहीं 100 करोड़ कमिट करा है, बट फॉर ओनली फर्दरिंग IKS वर्क, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का काम, वो इंडोलॉजी में कमिट करा है उन्होंने। अब वो कैसे आएगा, वो डायरेक्टली देंगे या थ्रू दी IKS डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू आएगा, ये सब अभी क्लैरिटी है नहीं। तो बट वी आर इन टच, और जी ऐसी जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको चेज करते हैं, और दूसरा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। तो सबको नमस्ते। मैं ये कहना चाहता था कि खुद का बेस क्रिएट करना, मतलब आपका ऑलरेडी काफी बड़ा बेस है, लेकिन खुद का बेस स्क्रैच से बड़ा करना मुश्किल कार्य है काफी। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, उनको यूज करके जो ये हिंदू फंड का बेस बड़ा कर सकते हैं क्या? मैं ये, जैसे कि विश्व अभी ये HSS का 3 साल में एक बार होता है, अभी हो रहा है दिसंबर एंड में। अगर अप्रोच करके कुछ अच्छे वक्ता का उधर कुछ ऑर्गेनाइज कर सकें, मतलब उनसे कि भी जो 80 देशों से आ रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 2000 कार्यकर्ता,
तो अगर जैसे आरएसएस का बेस है, एचएसएस का, जो एग्जिस्टिंग बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका अभी दिमाग दूसरी तरह से चल रहा है, लेकिन अगर हम पेनिट्रेट करके उसमें जाके आपका जो है, जो आइडिया है, जो ताकि क्या है कि उनका थोड़ा सा चेंज करने का माइंड और ज्यादा अप्रोच कर सके चेतन फंड जी, की पता तरफ। नहीं कैसे करना है ये, मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे एग्जिस्टिंग बेस यूटिलाइज करें। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ जाके ज़रूर बात करते हैं। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मैं सनातन घर वापसी फाउंडेशन भी फाउंड करी है अभी। तो फॉर एग्जांपल उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए अनुभव को एक पता चला, एक संस्था 21 दिसंबर को जयपुर में एक 50 हिंदू जाति ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो रही हैं। तो उनसे चेज करा, उनको रिक्वेस्ट करी, पिच दिया। उन्होंने हमारे को 1 घंटा दिया है बात करने के लिए। वो इतने इम्प्रेस्ड हुए इस काम से कि क्लैरिटी से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाल दिया कि हम इस पे काम करेंगे, और एक 1 घंटा भी दे दिया। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर करते हैं, बट यूजुअली मिलती नहीं है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। मतलब आप सोचिए, मैं आरएसएस में जाऊं तो किससे जाके क्या बात करूं कि 1,000 करोड़ रेस करें? वो कहेंगे तू कौन? मतलब एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जी मैं हमने उनको जाके नहीं बोलना कि रेस करना है। ये मैं चाहता हूं कि प्लेटफॉर्म जो है, फॉर एग्जांपल कोई भी उनके प्लेटफॉर्म है जैसे, तो अगर उधर आपको प्लेटफॉर्म देते हैं या किसी को देते हैं वक्ता को, तो हमें क्या है कि मैसेज दे देना उनके कार्यकर्ता को ताकि फैल जाए। आज हिंदू जागृति समिति का भारत मंडपम में 3 दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ। उन्होंने पैनल पे बिठाया था। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि शिवाजी महाराज के और उसमें घर वापसी वाला कुछ बोले। मैंने सबसे पहले हिंदू फंड बता दिया सबको 2 मिनट लगा के। उसके बाद मैं सवाल पे आया। राहुल सर, आपने कहा कि लोगों को कनेक्ट करें, तो लेट्स से कुछ लोग होंगे जिनके हाथ में ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा, बट नए लोगों को आप क्या रेकमेंड करेंगे कि कैसे अप्रोच करें, और उनको क्या डे वन पे इस तरीके से करें कि हम मैन्युस्क्रिप्ट्स भी करते हैं या फिर कल्चरल से लाए, जी और किसको अप्रोच करें किसको ना करें, और इसके पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं? स्पेशली क्योंकि देखो, एक बार आपने अपनी एक्चुअली इसमें बताया था प्रेजेंटेशंस में, कई बार हम जब वहाँ पे आईआईसी सेंटर्स में भी, कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी आपको चैलेंज आने लगे थे क्योंकि आप बिजनेस रन कर रहे थे। एंड मैंने आपको शायद बताया कि मैं खुद एक बिजनेस स्टार्ट करा है मैंने, तो मैंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल शायद मुझे क्लीन अप भी करनी पड़ेगी, पता नहीं कोई देख के उसको रेड फ्लैग कर दे। तो जब किसी को लाएं तो कैसे उसको जोड़ने की कोशिश करें, किसी नए को? बिजनेस रन करना और बिजनेस में लोगों को फैलाना, अपने बिजनेस में और पर्सनल नेटवर्क में लोगों को जोड़ना दो अलग अलग बातें हैं। पर्सनल नेटवर्क तो हर कोई जोड़ सकता है, और अगर आप कोई भी यहाँ पर बाकी लोग, कोई एम्प्लॉय हैं, कोई रिटायर्ड हैं, तो फ्रेंड्स नेटवर्क है, कोलीग नेटवर्क है, तो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, दोस्त होते हैं, और थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। उन सबको एक हमने मैसेज दिया हुआ, वो एक नोट है पूरा और एक पीडीएफ है, वेरी सिंपल पीडीएफ। मैं अभी श्रृंगेरी पीठ जगत गुरु शंकराचार्य जी को वहाँ पर मिला, और उनको हिंदू फंड की बुकलेट दी थी जस्ट 4-5 दिन पहले। उन्होंने 2 मिनट लेकर पलटी। वो इतने क्रिस्प मैसेज में उन्होंने कहा, आपने तो बहुत ही कम शब्दों में पूरा मैसेज दे दिया। तो वो इट्स वेरी नाइसली डन। कम शब्दों में सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन फॉर द 1,000 करोड़ क्यों रेज कर रहे हैं। तो इवन ही गॉट इट वेरी क्विकली। तो हर किसी को वो, अगर आप पीडीएफ फॉरवर्ड करेंगे, अगर थोड़ी भी सिंसियरिटी होगी, देखेंगे तो एकदम मैसेज पता चल जाता है। तो वो है, और नोट है, उसको हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी डाल सकते हैं। एक्चुअली हमें अपनी वेबसाइट पे भी डालना चाहिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो नोट। बाकी अगर यहाँ वेबिनार में जोड़ दें, बस उतना काम अगर आप करें, फिर होपफुली धीरे धीरे द मैसेज कैन स्प्रेड एंड पीपल कैन जॉइन कॉन्ट्रीब्यूशंस। बट कोई फंड रेजिंग आइडियाज, अगर आप, जैसे आपने हमको बोला कि मैसेज भी आपके पास है, कि आप एक मैसेज अपने फ्रेंड्स को पीडीएफ फॉरवर्ड कर सकते हैं, इफ दे लाइक इट देन दे कैन डू इट। कोई ऐसा छोटा सा जैसे फंड रेजर आइडियाज आप करो कि हाँ जी, अगर हम जैसे होते हैं ना कैंपेन्स चलाते हैं, कि ये कैंपेन चला करते सके, हैं कोई ऐसे आइडियाज? करते हैं फॉर एग्जांपल अभी एक हमारे को एक डोनर मिले हैं, कंट्रीब्यूटर फ्रॉम हैदराबाद। Actually we found two rich businessmen there from Hyderabad who approached us and come and met us in Delhi and all of that. कुछ डोनर, कुछ ग्रांटीज को से बात भी करी उन्होंने, ऑन देयर रिक्वेस्ट हमने बात करवाई। So one of them abhi is organizing a gala dinner at his own cost and calling his network of, I don't know, 20-30 rich industrialists and
whatever, rich Hindus from Hyderabad, all Telugus, and is organizing a dinner in a 5-star hotel at his own cost for us to come and make a presentation. तो वो करेंगे. So ऐसे अगर लोग organize करेंगे तो हम कर पाएंगे, right? So I just wanted to know if you ask for funds for specific projects, because sometimes it's a little easier to get people interested if they know what the end product is. For instance, we're transcribing a manuscript. One grantha will cost this much. So is there something like that happens? yes, a little bit. So for example, on the website we have campaigns, and you could come and donate to a specific campaign. Okay, fine. Not all the projects running, for example, just to say one grantha would be very, very hard. But for example, the Nepal library that I just spoke about is listed here. Right? Correct. So he's requested 24 lakhs. We've actually given 12 lakhs already to MIDF. So this number has to be updated and they will release it further. But he doesn't have the full grant right now. So if we get more, we'll release it, for example, right? So this is all here as well. Our WhatsApp group is only admin only group, right? Is there any platform where participants can discuss or ऐसा कुछ है क्या अभी? I mean, those things are very hard to manage. They break down into forwards and whatever, so we are not doing that. But we are going to be forming a Google group for email communication that we probably can open up. That's all. You're all going to be added via the Google group on your calendars. सारे जो ये webinar के updates होंगे वो भी आपके calendars से update हो जाएंगे. That's via Google Groups, which at this point is not active, but we could potentially make it active so that people can talk. But honestly, we don't have the administrative team to be able to manage such things, a breakdown in such groups. So we'd like to avoid it for now.